Hello, welcome everyone to the live stream and the quiz which is online. I'll hand over to our volunteers and the quiz masters for the quiz, and we welcome you all to the Science Day celebration online, and we wish you all a happy Science Day once again. So over to you, Dhairya and the team. Hello everybody, I am Dharya and Harshal. This is Harshal. We'll be your quiz masters for the day. And the first answer will receive a curiosity box, which Chaitanya will show us. And that will contain a few DIY activities, experiments that you can try at home. It's like a goodie box with anything in. There are a lot of things that can go in there and it will be fun to play with. And so first of all, before we actually get into the quiz, I would like to wish every one of you a very happy National Science Day. So that was the curiosity box. That is going to be a prize if you answer questions correctly. Okay. Also, please mention your email address so that we can confirm and send the box to you. So, if we're ready, let's start with the first question. Cool. So, the first question coming up on your screen. Which tiny ocean creatures make most of the energy in the sea? छोटे छोटे कौन से समुद्री लगभग सारी ऊर्जा बनाते हैं? Your time starts now. Is this better for the stream? Wait for the Can you hear us still, or It's audible but really bad. So then yes, but posting will do. We can maybe try both. okay? So we'll now continue to the answer. Who gave the correct answer? Swadesh India. So Swadesh India gave the correct answer. Please
share your email ID so that we can reach out to you for the prize. Here is the answer. So the reaction involved is known as the Thermite reaction. Effectively, the rust oxidizes the aluminium, and this is such a high energy exothermic reaction that the iron now melts. And if you have created a cast around the railway tracks, it will fill the entire void and with molten iron, which will then uh, join the two tracks together. And this is an exothermic displacement reaction. So yeah, we'll just try a different microphone. Is this on? Right. This looks odd. Check if the audio is fine now. I don't think the mic is on, but the audio is fine. I think. Okay. Hmm. So we'll move on to the next question. Bees communicate with each other to share the location of flowers. How do they do it? मधुमक्खियां एक दूसरे को फूलों की जगह कैसे बताती? बीज बात कर सकती हैं? I mean, बात नहीं करती हैं, but बताती हैं. ओके, ठीक है. ये कभी सोचा ही नहीं था कि how do bees know where to look and how to like how beehive में सिर्फ एक जाति है तो दूसरों को कैसे बताती है कि कहाँ फूल है कहाँ नहीं है? तो चींटियां क्या करती हैं, वो एक केमिकल्स का ट्रैक बिछाती हैं अपने पीछे. These are called pheromones. और ये फेरोमोन्स फिर दूसरी चींटियां सूंघकर उनके पीछे पीछे चलती हैं. नहीं, वो तो पता था मुझे. वो तो हाँ. वो तो सूंघ के चलती है, वो तो जमीन पे हो जाता है. पर अब मधुमक्खियां तो हवा में होती हैं. Yes. हवा में कहाँ से कुछ नहीं. ये वो कार्टून तो नहीं है कि ऐसा केक का खुशबू आ जाए, वो तो नहीं रहेगा. बट ये मधुमक्खियां काफी इंटरेस्टिंग जीव है जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करती है अपनी हनी बनाने के लिए. So looks like Anush Dikshit got the answer, and these are called waggle dances. So inside the beehive, bees will go and essentially act out a dance. और इस डांस किस तरफ जा रहा है, कितने बार विगल कर रहे हैं, ऐसी चीजों से उनको पता चलता है. तो मानो कि सूरज कहीं ऊपर है, ठीक है, नून के आसपास. तो अगर मधुमक्खी को बताना है कि छत्ते के इस तरफ, मतलब पीछे की तरफ और मेरी इस तरफ अगर कोई फूल है तो वो क्या करेंगे, ऐसे डांस करके ऐसे 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 करके मेरी अंगूठे पे दान दीजिए, ऐसे 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 करके जाएंगे. और ये कितनी बार करेंगे ऐसे ऐसे विगल 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 विगल, ये करेंगी जितनी बार देखिए. अगर ये समझो 5 बार करेंगे, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग नंबर होता है. समझो 5 बार करेंगी तो 1 किलोमीटर दूर, 10 बार करेंगी 2 किलोमीटर दूर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर वो वापस आ जाएंगी. तो डांस करके ऐसे वो बता देती हैं एक दूसरे को कि मुझे यहाँ पे कहीं फूल मिला था. Anush Dikshit, please share your email with us so that we can get back to you. And congratulations. Yes, बहुत अच्छे आंसर दिया. Next. What is the real shape of the Earth called? पृथ्वी का असली आकार क्या कहलाता है? 2 मिनट. पृथ्वी गोल नहीं होनी चाहिए, मुझे तो गोल ही कहा गया है. To an approximation, हाँ. But
because आपके पास tidal forces हैं, आपके पास एक तो एक equatorial bulge है, वो क्यों? you're spinning, you have a circumpetal force. Yes. ओके, हाँ, तो इसी को ऐसे समझे कि हम जब कुछ घुमाते हैं तो पुल महसूस होता है उंगली पे, तो शायद पृथ्वी को भी वो पुल महसूस होता होगा। ठीक है, और उसकी वजह से शेप बदल जाता है। Yes, because that is strong enough on the scale of the Earth. ओके, क्योंकि it goes as r square ना, and इधर r 6,000 किलोमीटर है. ओके, बट तुम इसका मतलब ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हो कि पृथ्वी कई जगह पे ज्यादा ऊंची है और कई जगह पे क्या ज्यादा नीची है? Yes. ओके, तो जो कि इक्वेटोरियल पे ज्यादा ऊपर होगी मतलब। हाँ. भाई शिप को कहा क्या जाता है ये तो आप ही बताएंगे, हमने तो हिंट्स दे दिए कि। So Aarti Shah has got the answer. ओह राइट, बहुत अच्छा। And it is called a geoid, which very ironically means the shape of the Earth. This is a slightly exaggerated 3D model, and what this does is it takes into account not only the equatorial bulge, because with just an equatorial bulge, what you get is an ellipsoid, which is an ellipse rotated through space. This also takes into account various tectonic activity that causes bulging across the Earth. Oh, so doesn't this mean that the mountains that we think are the tallest may not be the tallest? Yes. If we just change the perspective. Okay, that is something to think about for you. It depends on how you define tall, because you can define tall as height above mean sea level, and the geoid represents mean sea level. But if you define it as from the center of the Earth, then it's a different answer. Interesting thing is, because mean sea level is an approximation, there are a lot of land masses that are below mean sea level. Case in point, the entirety of Netherlands. Then isn't it a country where Yes. people live? Oh, so it's entirely under sea level, mean sea level. Yes. Oh. Okay. The more you know. Yes. So moving on to the next question. For which disease was the first vaccine created? And a bonus question to this is, why is it called a vaccine? पहली वैक्सीन किस रोग के लिए बनाई गई थी? इसे वैक्सीन क्यों कहा जाता है? तो बता दूं, वैक्सीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है मनुष्य का। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज जो बूम आया है the past 100 years में, the population boom that went from like around less than 1 billion towards 7 billion in just a span of like 200 years is remarkable, and much of it came from vaccine. Yeah. Because the biggest check on human population were diseases, and we found almost a sure way to combat that. Yes, because the thing is, it's preemptive, right? It doesn't, like, you're not responding to something, you're preemptively stopping disease. Yeah, so there's also another idea, like preventing something is much better than actually trying to cure it after it happens, and that has helped humankind a lot. बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है ताकि चांस ही ना हो आगे जाके डिजीज होने का। And we've already got an answer. बहुत होशियार लोग हैं, सबको पता है। Yep. So the answer is smallpox. This was created by Edward Jenner, and the word vaccine comes from the Latin word vacca, which means cow, and that is because Jenner had observed that people who got infected with cowpox would not get infected with smallpox, and using cowpox inoculations
or basically blood samples containing cowpox to cause people to. So cowpox wasn't as serious as smallpox. It was easy to recover from. So he essentially made people undergo cowpox so that their immune system could handle a smallpox infection. And because cowpox, vaccine. तो साइंटिस्ट बहुत बार ज़्यादा सोचते नहीं है, जहाँ से जो चीज़ आई उसी को वही नाम दे दो। हमें लगता है कि वो अनयूजुअल है क्योंकि वो अलग लैंग्वेज से है, बट Yep. नहीं सोचते हैं साइंटिस्ट। बट ठीक है, Moving on to the next question. When you pedal a bicycle, in which direction does the road's friction push the tires? जब आप साइकिल चलाते हैं, सड़क का घर्षण या फ्रिक्शन टायरों को किस दिशा में धक्का देता है? फ्रिक्शन धक्का देता है? Yes. तो हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को धक्का देते हैं. But no, so effectively what you do is you keep the wheels rotating and we apply a force above the wheel. आप एक्सल पे फोर्स लगाते हो. ओके. फ्रिक्शन टायर के रिम पे फोर्स लगाता है. बिल्कुल. And because of the rotation, this causes the entire wheel and yourself to move forward. तो फिर हम जब चलते हैं तब भी हम फोर्स नहीं लगाते जिसकी वजह से हम चलते हैं? Not quite. I mean, yes, friction plays a role. Okay. Friction keeps your foot where it is. Friction prevents you from slipping. ठीक है. What you do is you move the other foot forward. Okay. Your force does that. अच्छा. Walking is essentially controlled falling. And we have perfected controlled falling. Not quite. Yeah, कभी मैं चलते गिर सकता हूँ. आंसर आ चुका है? काफी जल्दी. Purvanshu Garg got it. Please share your email IDs. Yes. ताकि we can reach out to you. So essentially friction moves along the direction of motion. So the wheel is trying to spin backward and friction pushes it forward. But this is for the back wheel. क्योंकि back wheel पे हम धक्का लगा रहे हैं. The front wheel is free and it needs to be made to spin forward. So that force comes not from the axle but from the ground. So the frictional force is backward of the wheel. So if this is the direction of motion, friction is pushing it this way. तो ये अगर नीचे वाला पार्ट है, हाँ, तो मतलब जो पीछे वाला व्हील है वो, और फॉर रेफरेंस साइकिल इस तरफ जा रही है. ठीक है, तो नीचे वाला व्हील ऐसे धक्का मारता है ग्राउंड को. और वो ग्राउंड एज अ रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन इस तरफ भेजता है. हाँ, जिसकी वजह से जो मोशन है व्हील का जो सेंटर है वो एक्चुअली आगे जाता है. वो सेंटर आगे जाता है, बट व्हाट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड वो स्थिर रहता है. या क्योंकि व्हील अगले व्हील में पावर नहीं होता, जमीन उसी को चला रहा है. यस, नाइस. यस. So moving to the next question. Is the use of fins at the bottom of rockets? रॉकेट के नीचे फिन्स का क्या काम होता है? ये प्लेन्स जैसा ही नहीं होता, लाइक दोनों भी हवाई जहाज हैं. Plane wings give you lift. Okay. So that is where the upward thrust comes from. Without a wing, a plane wouldn't move up. Okay. But rockets don't use that mechanism. Rockets में engine है, engine से सारा burnt matter निकलता है, and all the fuel is burnt and pushed out, and that push is what gives the thrust. But
I mean, planes also move on the basis of thrust, but they apply horizontal thrust. Rockets apply vertical thrust. Okay. Yeah, it makes sense. Why would a rocket need fins अगर उसको lift नहीं कर रहा है ना wind control कर रहा है? So Kalyani Chandarkar has answered it correctly. She has said that they stabilize them. ये stream पे आधे लोग मेरे से ज़्यादा smart. Stabilization is exactly why they're there. So the deal is, rocket thrust is an unstable force. Oh. So what this leads to is that slight deflections in the rocket from, say, slightly uneven airflow will cause it to drift off path or cause it to spin. Fins prevent that spinning or that drift by allowing a counter force to be applied to that. Of course, fins are not the only way to do this. You can do vectoring of the thrust. Essentially, the nozzle of the engine can be, if this is the rocket, the nozzle can be moved relative to the rocket to correct for any deviation. But math नहीं लग जाएगा वहाँ. हाँ. That is engineering for you. But fins were a simple, solid way to at least prevent spinning and keep them along the. एक सेकंड. इलॉन मस्क भी ऐसा कुछ नहीं बना रहा स्पेस एक्स से शायद. मैंने देखा था एक वीडियो. वर्टिकल रॉकेट कंट्रोल हो रहा है एक अजीब तरीके से. That is thrust vector. ओह, तो ये हो चुका है. Yes. इतना मैथ भी कर लेते हैं लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Statue of Liberty is made of copper. Why is it green? Okay. In Hindi, sorry. Statue of Liberty तांबे से बनी है, लेकिन हरी क्यों दिखाई देती है? फिर इतना बड़ा, मैंने सुना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएस में. Yes. ऐसे कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे किया इतना बड़ा? तो पहले तो मॉडल्स बने थे फ्रांस में. Okay. एंड आफ्टर दैट उन्होंने अलग अलग पीसेस कास्ट करके शिप किए अक्रॉस द अटलांटिक ओशन. और फिर न्यूयॉर्क में पूरा फाइनल असेंबली फिर से हुआ. ओहो, बहुत ज्यादा मेहनत. यस. मिल भी आंसर क्या? कभी सोचा इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों कहा जाता है? Oh, we have an answer. Oxidation is absolutely correct. So originally the statue did look like copper, but जैसे जैसे वो expose होता रहा, it got discolored and it acquired a green layer of copper. Congratulations, Ankuri Roth. As for why it is called the Statue of Liberty, America and France had a very strong relationship around the 17 and 1800s during their respective war for independence and Republican revolt. फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का टाइम बहुत ही ज्यादा पास था. Yes. भूल गया था. So, moving on to the next question. Which land animal, apart from humans, kills the most people? कौन सा जमीन पर रहने वाला जीव मानव को छोड़कर सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है? ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया कि लैंड और एनिमल और नॉन ह्यूमन. What do you think overall सबसे ज्यादा जान लेने वाला प्राणी कौन होगा? I mean, organism. If we're going organism, I will say something like it varies, but TB was bad, Black Plague was
terrible. Right. It's not, as we discussed during vaccines, it was diseases, not animals. That But something I found out so in some of my like कुछ थोड़ा सा मैंने investigate किया था. Will so people are saying mosquitoes. Interesting point. Mosquitoes are actually the biggest reason for deaths because वो खुद नहीं मारते but उनके वो carry करते हैं बहुत सारे diseases. That is not the right answer by the way. So please keep thinking because we are saying land animal. It is not an animal, it's an insect. Can the insect be called animals? Yes, insect be called animals, but it's a land animal. I think I meant mammal. So the mosquito does not directly kill anyone. We're talking about like direct kills. It kills time. Mosquito carries pathogens. A lot of them. Malaria is the most prominent. जो indirectly kill करता है. Any other attempts? 20 seconds to go. Oh, so Kiran Kare has come up with the right answer. It is hippopotamus. Yup. This cute looking, this image makes it look cute, but this guy is responsible for the most number of deaths caused, deaths in humans. So hippopotamus are fairly aggressive and also very strong. They have some of the strongest bite forces of all mammals and also some of the largest jaws. And they are in fact responsible for the most human deaths. Imagine being able to squash 2 watermelons, looking like they're grapes. Like grapes की तरह वो watermelons crush कर देता है. तो without breaking a sweat. तो इतना ज़्यादा strong उसका jaw है. Obviously वो ऐसा मस्करी में भी अगर चबा देगा तो क्या होगा तुम सोच ही सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो. Moving to the next question. Also, we your emails. Yeah, please keep emails. This question. El Niño changes ocean temperatures and winds. Which part of the world does it affect the most? El Niño महासागर के तापमान और हवा को बदलता है. यह सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, दुनिया के किस क्षेत्र में प्रभावित करता है? इसका प्रभाव दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है? ये ओके. तो एल नीनो मैंने सुना है कि एक ओशन करंट है जो ओशन करंट नहीं है, एक ओशन करंट का रिवर्सल है जो लगभग 2 से 7 साल में रिपीट होता है. इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इवन इन इंडिया इट अफेक्ट्स अस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मानसून. और मानसून अगर लेट आएगा या जल्दी आएगा, it can influence that. There is also another reversal which is similar to the El Nino called the La Nina. La Nina तो ठंडा करता है मैंने सुना है. Yeah. But क्यों? That is it is not very well understood still. Okay. At least I haven't understood it quite in detail because there are a lot of ocean currents and a lot of wind currents that are involved in all of these processes. शायद कि धरती पर मेरी भी एक थियरी है, पता नहीं कंफर्म होगी कि नहीं, कि धरती पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान होता है. तो अगर ये करंट्स वहाँ का पानी कहीं और लेके जा रहे हैं तो तापमान में असंतुलन बनना तो हो ही जाएगा. So Vishwardhan Sharma has answered it correctly. It affects the Pacific Ocean and mainly South America and Southeast Asia and also Africa. Africa I'm saying. Australia, yes. I have forgotten my continents. कभी कभी उसका प्रभाव इंडिया पे दिख जाता है बट डायरेक्टली हमें अफेक्ट नहीं करता है. Yes. अभी
ठीक है, हम ये क्लियर कर दें कि वी ओनली हैव वन प्राइज फॉर ईच क्वेश्चन, सो ओनली द फर्स्ट वन टू आंसर विल गेट दैट प्राइज on the condition that that person gives us their email IDs. Okay. Also, I hope you that is clear. can only win one question. Yeah, you can only so there's only a limit of one prize per student. So this is the last question for the quiz. Plants have two types of vessels that can connective tissue: xylem and phloem. One xylem carries water and phloem carries nutrition. Which one is made of dead cells and which one is made of living cells? पौधों में दो तरह के नलियां होती हैं, जाइलम और फ्लेम। जाइलम भोजन पहुंचाता है और जाइलम पानी पहुंचाता है और फ्लेम भोजन पहुंचाता है। इनमें से कौन सा मृत सेल्स से बना है और कौन सा जीवित सेल से? सेल्स यानी कोशिकाएं। तो तुम ऐसा कहना चाहते हो कि पौधों में मृत कोशिकाएं भी होती हैं? हाँ। ओह, लकड़ी देखिए कभी। हाँ, बट मुझे लगा था बाहरी सतह वही बस मृत सेल से बनी होती है, अंदर की तरफ भी until a few small sections which are the phloem, क्योंकि वो रूट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। अच्छा, काफी फैसिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स। हमें दिखता नहीं है, लाइक वी डोंट सी एनीथिंग मूव, बट दे समहाउ ट्रांसपोर्ट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम बहुत दूर दूर तक। Yeah, we already have a correct answer. We have Parth Devadwar. So Parth Devadwar, congratulations. The answer is indeed the xylem is made of dead cells and phloem is made of living cells. The reason is water transport does not require active energy. Water transport happens through transpiration, which is पत्तों से पानी evaporate होता है, and this creates a suction pull that pulls the water from the roots. और इसमें सेल्स का कोई रोल नहीं रहता, बट फ्लूएम को पत्तों से सब जगह न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल्स. Therefore, most of the xylem cells are dead, but phloem is mostly an active tissue. Okay, तो इसे कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये मानिए कि अब अगर इंजेक्शन, एक सिरिंज देखी होगी आपने, तो सिरिंज में आप जब कोई चीज़ खींचना चाहते हैं, पानी, कोई लिक्विड मटेरियल आप खींचना चाहते हैं, तो ऊपर से उसको खींचते हैं, तो आप ऊपर से पानी को ऊपर खींच रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो जब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में पत्तों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, हमें दिखते नहीं है, बट इन छेदों से पानी निकलता है, और पानी ऐसे तरल फॉर्म में नहीं निकलता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलता है, वैसे गैसियस फॉर्म में थोड़ा पानी निकलता रहता है। अब अगर पानी ऊपर से निकल रहा है तो ये एक तरह से एक सक्शन प्रोड्यूस करता है नीचे से पानी खींचने के लिए। अब अगर ये सक्शन और ये सक्शन काफी होता है पूरी जड़ों से पानी ऊपर तक खींचने के लिए, समझ रहे हो। तो अगर सक्शन काफी है तो प्लांट क्यों बोले कि मैं उसमें एनर्जी डालूं, जीवित सेल का उपयोग करूं। ऑन दी अदर हैंड फ्लोएम, अब अगर न्यूट्रिशंस बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी खर्च करके जाना पड़ता है, और ये दोनों तरफ जाते हैं। ये रूट से टिप तक नहीं जाएंगे, टिप से रूट तक भी जाएंगे, एक सेंटर से बाहर की तरफ भी जाएंगे। तो इसके लिए हर चीज के लिए थोड़ा एनर्जी लगता है। अगर एनर्जी लग रहा है तो उसमें जीवित सेल होना बेटर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहेगा उस जीवित सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया तो पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सभी को पता होता है। तो जीवित सेल होना जरूरी है उस केस में, ठीक है। तो अब Dhairya will list out the names of the winners.
So we'd like to congratulate Omkar Pandit, Jayant Dubey, Swadeshi India by NY, Anush Dikshit, Aarti Shah, Nikul Mehra, and Purvanshu Garg, Kalyani Chandorkar, Ankuri Raut, Kiran Kale, Vishwardhan Sharma, Parth Debadwar, and Dr. Sabir Kumar Bandopadhyay. Congratulations, everybody. And we would like to request you all to email Science Activity Center at SAC. Science Activity Center at acads.iser Pune. Yeah, we'll just show you the email. So this is the email to write to, and we hope you had fun in the quiz. We hope you learned something. We certainly did. मजा आया, like we saw a lot of different aspects in science और काफ़ी सारे factoids पता चले, काफ़ी लोगों को पहले से पता भी थे, बहुत अच्छी बात है, बट आई होप कि जिनको नहीं पता थे उनको थोड़ा ज़्यादा पता चला है, जिनको ऑलरेडी पता था उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है. But science is filled with all these little bits and pieces of knowledge, or we are still finding out more. We're still in the business of just finding out more. Each and every day, we are just exploring. Each and every lab here is exploring at a different aspect in science, and that is just happening. There's just a process that is happening all over the world. So yeah, that's what I love about science. It's just an attempt of humans to try and understand the world. Now, before we say goodbye, I would like to thank a lot of people who really helped in making this possible. First of all, Yojit, who is behind the scenes, along with Chaitanya sir from SAC and Ashok sir from SAC. Also to IISER for conducting this entire Science Day program. And we would also like to thank you all, the participants, for enjoying with us and giving us your time. And stay curious, stay inquisitive, and This has been keep Dhairya learning. and Harshal, and we've had a great time here. And thank you all for that. Yeah.